Welcome everyone. So I'm back with another interesting story. Dear students, do you really like stories? In fact, we all love stories, don't we? In childhood, we loved to hear stories from our grandparents, our parents, or sometimes from our friends also. Stories take us to a different world. And our today's story, Iswaran, the Storyteller, which is taken from your Moments Supplementary Reader, written by the famous story writer, cartoonist, and humorist R.K.Laxman, revolves around two characters, Mahendra, the supervisor, and Iswaran, a cook and a great storyteller, who can make even the most boring story quite interesting. और उसका स्टोरी सुनाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि वो सुनने वाले को बांध के रख देता है. He keeps his listeners spellbound. But be fair, some part of this story narrated by Iswaran may scare you also. Are you ready for the journey? So here we go. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात जब महेंद्रा अपनी नींद से जागा तो उसने एक डार्क शेडो देखी और वो डर गया. क्या वो कोई भूत था? Let's find out the answer of this question in this chapter now. The story was narrated to Ganesh by a young man. Mahendra by name, he was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. Dear students, in this paragraph, we found an idiom. Idiom means muhavra. To keep an eye on, which means to check, to supervise, or to take care of. We can make it sentence like this. Please keep an eye on things here until I get back. You must try your own sentences also. Here we read an adverb also, now and then, which means from time to time, yani samay samay par. Its synonyms are at times, now and again, occasionally, once in a while, and so on. तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ये स्टोरी गणेश को एक यंग मैन महेंद्रा ने सुनाई थी, जो कि एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर था, जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स और बाकी चीजों के लिए सुपरवाइजर हायर करती थी. हायर मीन्स किराए पे रखना. अब महेंद्रा का काम इसमें था कि वो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी वर्क साइट्स की एक्टिविटीज पर नजर रखता था और उसे हेड ऑफिस के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था. कभी कोल माइनिंग एरिया में, कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट में और कभी कभी कुछ ही मंथ्स के बाद किसी केमिकल प्लांट में जो कहीं पर भी स्टार्ट हो रहा होता था. He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook, Iswaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. Dear students, in this paragraph we read a word makeshift canvas tent, which is made of a thick fabric to be used for a short time only when nothing better is available, as you can see in the picture also. Another new word we found here is stone quarry, which is a large pit from where stones and other materials are extracted. In Hindi we can say पत्थरों की खदान. Another new word we found here is anecdotes, which is a short account of a real incident or person. In Hindi we can say लघु कथा, जब हम किसी रियल स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं. तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि महेंद्रा
बैचलर यानी अनमैरिड था। उसकी जरूरतें भी सिंपल थी। वो किसी भी ऑड कंडीशन में एडजस्ट कर लेता, चाहे वो कोई इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या मेकशिफ्ट कैनवस टेंट जो किसी भी स्टोन क्वेरी के बीच में लगाया गया हो। उसका एक बहुत बड़ा असेट यानी संपत्ति थी ईश्वरन, उसका कुक, जो कि उसके साथ बहुत अटैच्ड था, जो बिना शिकायत किए जहां भी महेंद्रा की पोस्टिंग होती वहां चला जाता। महेंद्रा के लिए वो खाना बनाता, उसके कपड़े वॉश करता और रात को अपने मास्टर के साथ गपशप भी करता। वो उससे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अनगिनत स्टोरीज सुनाया करता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. In the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Dear students, in this paragraph we found a new word, desolate, which means uninhabited, यानी सुनसान, जहां पर कोई रहता ना हो. Another new word is miraculously, यानी चमत्कारी रूप से, which is an adverb. We can make it sentence like this: They miraculously survived the car crash. Its noun is miracle, adjective is miraculous, and adverb is miraculously. ईश्वरन में एक अमेजिंग कैपेसिटी थी वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मतलब वो अलग अलग फूड आइटम्स जो किसी डिश को बनाने में यूज की जाती हैं, तो वो जाने उन्हें कहाँ से प्रोड्यूस कर देता था, वो भी एक सुनसान जगह से जहाँ पर कोई शॉप दूर दूर तक नजर नहीं आती हो। और वो बहुत चमत्कारी रूप से जादू से इतनी डेलिशियस डिशेस बनाता था, वो भी फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ 1 घंटे के अंदर, जब भी वो किसी नए वर्क प्लेस में पहुंचे हों जहां पे वो किसी जिंक शीट से बने शेल्टर में रह रही हों। Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller, running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. So, dear students, in this paragraph, we found an adverb, leisurely, which means in a relaxed way. Its synonyms are unhurried, easygoing, comfortable, relaxed, languid, and so on. Another new word which we found here is dozing off, यानी झपकी लेना या ऊँघना. We can make it sentence like this: The movie was so boring that I dozed off in the middle of it. Another new word here is thrall, which means the state of being under the control of another person, यानी किसी का गुलाम हो जाना. तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता और ब्रेकफास्ट करने के बाद काम पे चले जाता, लेकिन अपने साथ कुछ खाना ले जाता. और इस दौरान ईश्वरन शेड को साफ करता, क्लोथ्स वॉश करता और फिर बहुत से बाल्टियां सर पे डाल के आराम से नहाता. और इस दौरान वह प्रेयर भी बुदबुदाता रहता. तब तक लंच टाइम हो जाता और फिर खाना खाने के बाद सोने से पहले वो कुछ पढ़ता. और ये बुक अक्सर कोई फेमस पॉपुलर तमिल थ्रिलर होती जो 100 ऑफ पेजेस की होती. और इसका इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन जो बढ़ा चढ़ा के दिया होता था वो ईश्वरन को बांध के रखता था. इट शोज कि ईश्वरन अपने आप एक तमिल है, might be belonging to Tamil Nadu. Now let's move towards next paragraph. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, "The road was deserted and I was all alone.
Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. Dear students, in this paragraph we read a new word, gesture, which means हाव भाव, जो हमें किसी पर्सन का मूड या मीनिंग समझने में हेल्प करते हैं. Here we read an adverb also, which is uncritically. It means गैर आलोचनात्मक रूप से. Its synonym is accepting or believing. जब हम किसी के व्यू पॉइंट को या किसी के डिसीजंस को बिना किसी तर्क वितर्क के एक्सेप्ट करते हैं. We can make it sentence like this. He accepted her decisions uncritically. तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ईश्वरन के अपने डिस्क्रिप्शंस भी तमिल ऑथर से इन्फ्लुएंस्ड होते थे जिन्हें वो पढ़ता था. जब भी उसे किसी छोटी सी छोटी घटना को भी एक्सप्लेन करना होता था तो वो उसमें सस्पेंस और सरप्राइज डाल देता. फॉर एग्जाम्पल, उसे ये कहना होता कि उसने हाईवे पर एक अपरूटेड यानी उखड़ा हुआ पेड़ देखा, तो वो उसे पूरे जेस्चर्स, ड्रामेटिक जेस्चर्स के साथ आईब्रोज को ऊपर उठाकर गोल बनाकर कहता, सड़क बिल्कुल सुनसान थी और मैं अकेला था. अचानक मैंने एक बहुत बड़ा झाड़ीनुमा जानवर जो सड़क पर फैला हुआ था वो देखा. मैं वापस मुड़ने के लिए आधा मुड़ा ही था, लेकिन मैं थोड़ा सा नजदीक गया और मैंने देखा कि ये तो गिरा हुआ पेड़ था जिसकी सूखी हुई टहनियां फैली हुई थी. महेंद्र अपने आप को कैनवस चेयर पर स्ट्रेच करता और ऐसे ही ईश्वर की कहानियों को अनक्रिटिकली सुनता रहता. So dear students, based on this part of the chapter, we have a very important question. In what way is Ishwaran an asset to Mahendra? And by now you must have understood its answer also. So its answer should be Ishwaran is an asset to Mahendra as he always remains with him. He cooks food for him, washes his clothes, cleans the living place and entertains him with his endless unique stories. ईश्वरन महेंद्र की संपत्ति की तरह था क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहता था, उसके लिए खाना बनाता, उसके क्लोथ्स वॉश करता, उसका घर साफ करता और उसे अपनी एंडलेस यूनिक स्टोरीज के साथ एंटरटेन भी करता. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल विद दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. इट इज जस्ट अ बिगिनिंग. So watch the next video to hear more interesting stories of Iswaran the Storyteller. So see you soon in second part of the story. Till then, keep enjoying learning English. Thank you.